स्टैंडर्ड 7th है, सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 7 है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट अभी इसमें आपको आज डिफाइन करवाऊंगी वेदर क्लाइमेट और एडेप्टेशंस। अभी देखो वेदर किसे कहते हैं, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर। उसे क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन over a long period time is called the climate of the region. Adaptation organisms develop special features and habitats that help them to survive in condition in which they live is called adaptation. अभी नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। 1 नंबर, एक्सप्लेन वेदर इज़ अ कंप्लीट फिनोमेनन। तो आंसर आएगा वेदर कैन वेरी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from now here and starts raining heavily. Sometimes a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. So sudden changes may occur in weather and it is not easy to predict. So weather is a complex phenomenon. Next question number 2, explain in brief about the climate of different regions of India. तो आंसर आएगा climate of different regions of India is different. For example, Jammu and Kashmir has a moderately hot and humid climate for a part of the year. Number 2, in South Kerala has very hot and humid climate. Number 3, in western region Rajasthan shows high temperature during most part of the year and winter lasts for few months during which the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is the typical desert climate that is hot and dry. Next, number 4, the climate of northeastern India is humid because this region receives rain for a major part of the year. Next, number 3, mention the characteristics and animals of polar regions. The polar regions are located at the north and south poles of the earth. The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months the sun does not set at the poles, while other 6 months the sun does not rise. In winters the temperature can be low as 37 Celsius. Animals such as polar bears, penguins, seals, whales, musk, oxen, many types of fishes, birds, the Siberian cranes, etc. live here by adapting to such adverse conditions. Next, number 4, mention the characteristics and animals of tropical rainforest region. आंसर आएगा रीजन ऑफ ट्रॉपिकल reforest has hot and wet climate because of its location around the equator. Even in coldest month, the temperature is generally higher than about 15 Celsius. During hot summers, the temperature may cross 40 Celsius. Days and nights are almost equal in length. Throughout the year, it gets plenty of rainfall. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds, insects, elephants, token lion-tailed macaw, red-eyed frog. Next, number 5, mention the adaptation of penguin for living in polar region. The adaptation of penguin for living
in polar region are as follows. Number one, it is white and merges well with the white background. Number two, it has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. Number three, they huddle together and by this they keep warm. Their bodies are streamlined and their feet have waves, making them good swimmers. Next, number six, explain in short about migratory birds. Birds inhabiting polar region must remain warm to survive. They migrate to warmer regions when winter sets in. They come back after the winter is over. So, Siberian crane comes from Siberia into places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetland of northeast and some other parts of India. In such warm regions, they get their food and lay eggs and incubate. Some migratory birds travel as much as 50,000 kilometers, escape the extreme climatic conditions at home. नंबर टू है एक्सलेंट गिविंग साइंटिफिक रीज़न. अभी नंबर वन है पोलार बियर्स हैव वाइट फर. तो आंसर आएगा पोलार रीजन्स कवर्ड विथ स्नो. पोलार बियर्स हैव वाइट फर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड ड्यू टू white fur. They are not easily visible in the snowy white background. It protects them from their predators. It also helps them in catching their prey. So polar bears have white fur to adapt their climate. Next, give reason number two. The polar birds migrate to warmer regions when winter sets in. The polar regions are covered with snow. There is extreme cold in winter. Birds must remain warm to survive. As an adaptation, the polar birds migrate to warmer regions when winter sets in, a region where they find their food easily. They lay eggs and incubate. By this, they escape the extreme climatic conditions at home. They return after the winter is covered. नेक्स्ट आपके हैं मेक द फॉलोइंग, वो करवा देती हूँ. इसके बाद आपको न्यू वीडियो में आपको मैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटेल्स में करवाऊँगी. पहले आप ये मेक द फॉलोइंग करवा रही हूँ जो करने हैं आपको. गिव द डिफरेंट वेदर एंड क्लाइमेट एंड पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन. अभी वेदर और क्लाइमेट. वेदर का फर्स्ट पॉइंट आएगा द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ वेदर. और क्लाइमेट का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. नंबर टू वेदर का आएगा वेदर कैन vary over very short period of time. Number two, climate of a place is fixed, so it cannot change for very short period of time. अभी पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन का डिफरेंस बिटवीन है जो आपको करना है. नंबर वन है पोलर रीजन का द रीजन्स नियर बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड पोलर रीजन. Tropical region, the region located around the equator is called tropical region. Number two, polar region. This region is covered with snow and it is very cold for most part of the year. Tropical region. Number two, this region has rainforest and the climate is hot and humid. अभी नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. ए और बी के ऑप्शन बता देती हूँ. पहले वन ए के हैं पोलर बियर, बी लायन टेल्ड मकाऊ एंड नंबर थ्री टोकन, नंबर फोर एलिफेंट, नंबर फाइव रेड आई फ्रॉग एंड नंबर सिक्स है साइबेरियन क्रैन. बी के ऑप्शन है टस्क, बी माइग्रेटरी बर्ड, सी वाइट फर, सिल्वर वाइट मैन एंड ई लॉन्ग लार्ज ब्रिक एंड फाइव स्टिकी पैड्स ऑन फिट. तो पोलर बियर का आएगा सी वाइट फर. नंबर टू लायन टेल्ड मकाऊ, तो क्या आएगा डी सिल्वर वाइट मैन. टोकन का क्या आएगा ई
लॉन्ग लार्ज बिग। एलिफेंट का आएगा, एलिफेंट का क्या आएगा, ए टस्क। एंड नंबर 5 रेड आइड फ्रॉग, तो क्या आएगा, 5 का आएगा एफ स्टिकी पेड्स ऑन फीट। एंड नंबर लास्ट है साइबेरियन क्रेन का क्या आएगा, बी माइग्रेटरी बर्ड। ये आपके क्या हो गए, मेथड फॉलोइंग हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको मैं क्या डिटेल आंसर करवाऊंगी, ठीक है। ये आपको क्लास में होमवर्क करना है, ठीक है। थैंक यू।